नमस्कार, मेरे साथ नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम जी है। That transition, and also that given what we've heard about the energy transition, आपने जो नीति आयोग के 3 बड़े-बड़े रिपोर्ट्स का लॉन्च देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के सभी भारतवासियों के लिए 2 लक्ष्य सामने रखे हैं। 2047 तक विकसित भारत होने का, जिसमें देश का जीडीपी $30 ट्रिलियन के आगे बढ़ना है। Mr. Suman Berry, member, Dr. Virmani, my good friends and colleagues, Secretary Environment, Tanmay, and the Chief Economic Advisor, Dr. Maheshwaran, my colleagues from NITI, distinguished members in the gathering. This is a day of happiness for all of us. This is a journey which has taken 18 months to complete. You don't get 11 reports by snapping your fingers. And this is work of a very high order, very high quality, backed up by top-class modeling and absolute thoroughness, and having a buy-in from multiple institutions and agencies. So this 11 reports are the culmination of a journey which began a year and a half ago. And the output is something which you will hear about over the next day and a half. And I myself, I'm not a climate expert, nor a subject matter specialist, but I'm amazed by the quality and depth of work that has come out of the effort of all the individuals who are involved, both inside NITI, outside NITI, and those who have guided it. So I'd like to place on record, without naming individuals because it's too large, over 300 individuals in 10 working groups have worked on this inside government, international agencies, think tanks, private industries, ministries, sectoral experts, all of them have contributed to this. A couple of things. The context for this was actually laid out briefly by my colleague Anshu. But to put it mildly, the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has actually laid out an ambitious goal for all of us. Viksit Bharat by 2047, to make India a developed nation by 2047, which means a country with a $30 trillion economy, with a per capita income of $18,000, having the lifestyle and a quality of life commensurate with that of a developed nation. That is an ambitious goal in itself. And NITI, of course, has had the opportunity to actually work in shaping the national vision. It's also been working with states in shaping state visions. More than 17 states have produced state vision documents. So I think it's a matter of satisfaction that NITI was at the center of all those developments. When that is going on, and when we look at long-term visions, you also run into, okay, what are the issues which can be roadblocks, which can be challenges, which can actually trip you along the way. We look at technology as one such hurdle which we need to address. You see what AI is doing around the world and other related technologies on the frontier technology side, quantum technologies, biotechnologies, etc. The other thing which can be a disruptor is climate change. And we're more than familiar, I don't need to go about it. This is an area which is going to be critical and it has to be addressed if India has to become a developed nation. And then the sad part of it, India is not the problem creator. We did not contribute to where the world is today. We are not a significant contributor. Unfortunately, we are one of the more impacted countries in the world. I think that is the injustice of the whole thing. But irrespective of all that, if we have to achieve our goals of 2047, we need to tackle this as well. And I think that's the genesis of this entire effort and exercise. Simultaneously, the Prime Minister has also set a goal for all of us, for the nation, to achieve net zero in GHG emissions by 2070. So we have to juggle with two balls simultaneously, a developmental goal of becoming a developed nation, which is perfectly doable and is within reach. However, it's not easy. Maintaining a growth rate of anywhere between 7.5% for 25 years is a tall order which not more than a dozen nations have done in the world in the past. And at the same time, go for a net zero goal of 2070 while actually meeting your development ambitions. So I think this is the conundrum which we all had to address, and that's why this entire exercise, and we'll give a few more details as we go along in greater depth. So NITI set out with this fundamental question: how do we manage to square this circle? How do we achieve our development goals, which is rapid economic growth which is also equitable and regionally balanced? Simultaneously, how do you meet the other goal which the nation has set for itself from the top, which is achieve net zero by 2070?
And that is how these groups started working. And the purpose was to come out with an integrated strategy. 15 years ago, I think really was the pace setter for what we are seeing today. So we've heard about Viksit Bharat at 2047, and we've also heard about net zero by 2070. And Secretary MOEFCC has given us the chapter and verse of the commitments, the formal commitments that India has taken, and India is a country that very much meets its commitments. But what I wanted to reflect on was, firstly, that Viksit Bharat at 2047 is actually a call for a modern society by 2047, and if you like, the economic transformation underpins that transition, and also that given what we've heard about the energy transition, we need for ourselves to articulate a vision of where we want to be by 2070, because, as has been indicated, very important investment decisions have to be taken by foreigners, by the private sector. So what I wanted to really focus on was this as a commitment to ourselves rather than as an obligation that we are taking on because of commitments to the rest of the world. We are responsible citizens, we made that commitment, but I just want to treat this as an exercise in development strategy. And seen in that way, India benefits, I believe, from being a relative latecomer, both in its demographic transition and in its attempted growth acceleration. And it stands to benefit from the massive investment in technological progress undertaken by other countries over the last 3 decades. And the important point is that these play to its strengths and complement its existing energy resource endowments. And these resource endowments are mineral, but they are also natural. Sunshine, the wind, etc. And for that reason, the Honorable Prime Minister's call for energy self-reliance in his Red Fort speech last August 15th is ambitious but attainable. And as the work undertaken by the NITI team indicates, the main challenge is likely to be the availability of adequate, affordable finance. But I would insist also market design that encourages the public and private sector alike to remain at the competitive frontier globally without excessive dependence on fiscal guarantees, be they state or central. I was entrusted with the responsibility to anchor the climate finance report, one of the 3 reports that's been tabled today, and I think many of the points that have been made that are in that report have been recorded both by Venu and by Arvind Virmani. I just wanted to make the point, and see the economic survey also speaks to the important dimension of the cost of capital. I think the important point that I wanted to make here is that the amount of foreign capital that we try and import is itself macroeconomically very sensitive, which is to say that up till now, really since the Asian financial crisis, we've operated on the basis of a rule of thumb of a current account deficit no more than 2 percentage points of GDP. Now, I don't have the translation of these figures, 6 billion, etc., into shares of GDP, but let me just say that to accommodate additional finance, economics tells you that needs a larger current account
in current account deficit. Study report on scenarios towards Viksit Bharat and net zero and poverty from the नमस्कार, मेरे साथ नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी है। सर, जिस तरीके से भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य स्थापित करना चाह रहा है, वहीं विकसित भारत की भी बात हो रही है। ये दो प्रमुख लक्ष्य कैसे हासिल हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो आज आपने जो नीति आयोग के 3 बड़े बड़े रिपोर्ट्स का लॉन्च देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के सभी भारतवासियों के लिए 2 लक्ष्य सामने रखे हैं। 2047 तक विकसित भारत होने का, जिसमें देश का जीडीपी $30 ट्रिलियन के आगे बढ़ना है और हर व्यक्ति का जो आय है वो $18,000 से होगा, जिससे कि हम एक विकसित देश की तरह जैसे वहाँ नागरिक रहते हैं वहाँ यहाँ रह सके। साथ में ये बदलती हुई क्लाइमेट की परिस्थितियों को देखते हुए, जिससे जनहानि बढ़ रहा है, बाढ़, सूखा, ये सब बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, उन्होंने एक नेट जीरो का भी लक्ष्य रखा और उसके लिए उन्होंने हिम्मत के साथ 2070 तक देश को एक नेट जीरो लेने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब बड़ी बात यह आती है कि कभी भी कोई देश इस प्रकार के 2 लक्ष्यों को एक साथ हासिल किया नहीं है। पूर्व में जो बड़े देश हैं, पाश्चात्य देश, वो लोग पहले विकसित हुए कोयले का इस्तेमाल और प्रदूषण करके, और उसके बाद वो क्लीन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह कर भी नहीं रहे हैं। आधा कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे। हम अब ये दोनों को करने का प्रयास, एक साथ करने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। तो इसी को स्टडी करने के लिए नीति आयोग ये रिपोर्ट्स का मैं बहुत 1.5 साल तक अध्ययन किया। जो उभर कर सामने आया है वो ये है कि हम 2070 तक नेट जीरो को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इससे हमारे विकसित भारत का लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देश विकसित हो सकता है 2047 तक और बाद में हम 2070 तक नेट जीरो भी प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए एक लंबी चौड़ी मेहनत करनी होगी। हर क्षेत्र में, उद्योग हो, ऊर्जा हो, खेती हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर क्षेत्र में हमें काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे, नई पॉलिसियों को लाना पड़ेगा। वो सब हमारी रिपोर्ट्स में आज और कल हम लोग शामिल करेंगे और ये सब अगर हम करते जाएंगे, ये तो दोनों लक्ष्य हमें प्राप्त करने की पूरी संभावना है। सर, एक और बात जो आती है कि $4.18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक भारत का ये माना जा रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे और इस इनिशिएटिव में सरकार और आम लोगों की कितनी सहभागिता हो सकती है? देखिए जी, देश अगर आगे बढ़ता है तो लोगों की मेहनत से ही आगे बढ़ता है। सरकार अकेले कुछ कर नहीं सकती और यही माननीय प्रधानमंत्री की भी लक्ष्य रहा है कि जनभागीदारी के माध्यम से ही हम हर चीज़ को अमल करें। हम लोग ऑलरेडी विश्व के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था हैं। पीपीपी के अगर दृष्टि से देखा तो हम ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, लेकिन अगर नॉर्मल भी अगर गिनती जाए अगले 3-4 सालों में हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसमें कोई संकोच नहीं है। आज की तारीख पे दुनिया के सबसे बड़े गति से विकसित होने वाले बड़े देशों में हमारा अव्वल स्थान है। पिछले साल 7.2% का हमें ग्रोथ हुआ है। इस वर्ष भी वैसे ही रहने की उम्मीद है। तो यह गति अगर हम बनाए रखेंगे तो हम बनेंगे ही, हमारे लोगों का परिवर्तन होगा, उनकी जीवन बहुत ही खुशहाल होगा, चारों तरफ नौकरियां होगी। सब देश हर क्षेत्र में, कृषि, इंडस्ट्री, सर्विसेज, सभी में बड़ा ही अच्छी स्थिति होगी। सर, एक आखिरी सवाल, मेक इन इंडिया ने हमारा जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको एक हम कह सकते हैं उसको बूस्ट दिया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज़, जो मूडीज का जो रैंकिंग आया है उसमें भी बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी है आने वाले वर्ष में और बढ़ेगी, क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो जो मोदी ने जो कहा है वो एक अपने इंडिपेंडेंट आकलन है, तो हमारा जो हौसला उससे बढ़ता ही है कि हम जो विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं, जब दूसरे लोग भी उसी को सराहते हैं और उसी बात को मानते हैं तो हमें तो खुशी होती ही है। मैन्युफैक्चरिंग में माननीय प्रधानमंत्री ने केवल मेक इन इंडिया नहीं किया, साथ में PLI, इस प्रकार के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। मोबाइल फ़ोन में आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा एप्पल फ़ोन जो बिकते हैं वो भारत में बने हुए बिकते हैं। हम लोग मोबाइल फ़ोन में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विक्रेता बन गए हैं। तो देश हर तरफ से मजबूत हो रहा है और शीघ्र ही पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये भी शीघ्र ही शुरू करने की संभावना है। इससे और परिवर्तन आएगा और गति आएगा। धन्यवाद। जी सर, मेरे साथ थे नीति आयोग के सीईओ VR सुब्रमण्यम जी। एक ऐसे इकोनॉमिक्स, हम कह सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा से साफ तौर पर बातें कहते रहे हैं,
अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम बातों पर बात करते रहें। जिस तरीके से 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो कंट्री बनाने की बात कही जा रही है, जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर होगा, तो ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार और आम नागरिक अगर मिलके काम करेंगे तो ये लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे। और भारत की बात होती है जब विकसित भारत की, तो वो लक्ष्य भी सबकी सहभागिता के साथ पूरा किया जा सकता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, दिल्ली।